Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope that all of you will be fine. And I welcome you all to this new lecture. Dear students, today we will study another topic of chapter 9, diversity among animals, that is subkingdom Parazoa or pseudo-metazoans, right? Dear students, as you know that we have already studied the protozoa, parazoa and metazoa, these three subkingdoms of the kingdom Animalia in the previous lectures in detail. Here we will again briefly explain the subkingdom Parazoa, right? As you know that the para means like and the zoa means animals, which means they are animal-like organisms, right? Or in other words, you know that the subkingdom Parazoa, it includes the simplest multicellular animals. The subkingdom Parazoa includes the simplest multicellular animals. They are multicellular, but as we have studied in the previous lecture, that they are just collection of cells which are not differentiated or arranged into tissues and organs. In other words, they lack tissues and organs. These animals are multicellular, but their cells are not organized or arranged into tissues and organs. इसका मतलब ये है कि इनमें tissues, organs और organ systems नहीं है. So they are the simplest multicellular animals. They are just collection of cells which lack tissues and organs. They are sponges and are called pseudometazoans, means not true multicellular animals. Now dear students, coming to its discovery, when they were first discovered in rocks, they were green in color and immotile. In a first टाइम जब रॉक्स में डिस्कवर किया गया तो इनका कलर ग्रीन था और ये इमोटाइल थे. इमोटाइल मीन्स कि दे लेक लोकोमोशन, दे कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस इनटू अनदर. Organisms which lack locomotion, which cannot freely move from one place into another, they are called immotile or non-motile or sessile, right? And organisms which are capable of locomotion, they are called motile organisms. What is locomotion? The free movement of an organism from one place to another is called locomotion. So, ये जो दो characteristics थे, green color और immotility, so when they were first discovered in rocks, they were green in color and immotile. So scientists believed that they are plants. ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ये ग्रीन कलर और इमोटिलिटी, कि ये दोनों कैरेक्टर्स प्लांट्स के हैं. तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जो है ये प्लांट्स है. बट व्हेन दे स्टडीड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा, दे वर लाइक एनिमल्स. लेकिन बाद में जब इन ऑर्गेनिजम्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स को जैसे कि न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन वगैरह को स्टडी किया गया, सो दे वर लाइक एनिमल्स, बट द ओनली एक्सेप्शन इज दैट दे आर इमोटाइल. लेकिन जो एक इनमें एक्सेप्शन है एनिमल्स से, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है, कि ये जो सब किंगडम पेराजोआ के जो एनिमल्स हैं, सूडोमेटाजोन्स है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, दे आर इमोटाइल, दे लेक लोकोमोशन, दे कैन नॉट फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस इनटू अनदर. बाकी इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स की तरह है, लेकिन जो एक एक्सेप्शन है वो ये है कि दे आर इमोटाइल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जी, द एनिमल ऑफ फाइलम पोरेफ्रा फाउंड इन रॉक्स. डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको ये बता दूं कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि व्हेन दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड दे वर ग्रीन इन कलर. तो इनका ये ग्रीन कलर क्यों था? The green color was actually due to symbiotic algae. इनके साथ, इन ऑर्गेनिजम्स, इन एनिमल के साथ एल्गी ने सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाया था,
तो ये जो ग्रीन कलर था दिस वाज ड्यू टू सिम्बियोटिक एल्गी, अदरवाइज दे आर एनिमल्स, राइट। लेकिन ग्रीन कलर इन एल्गी की वजह से था। एंड secondly, keep this point in mind that the animals of subkingdom Parazoa have numerous pores in the body wall. इन एनिमल्स के बॉडी वॉल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं। जो टर्मिनल पोर होता है, टर्मिनल या पोर या मेन ओपनिंग या मेन पोर ऑफ द बॉडी होता है दिस वन। द टर्मिनल पोर or the main opening of the body is called osculum. साइंटिफिक नाम जो इसका है, ये जो टर्मिनल पोर इनके बॉडी में होता है या जो मेन ओपनिंग ऑफ द बॉडी है, दिस इज कॉल्ड osculum. You must keep this in your mind, this term in your mind. It will come in phylum Porifera inshallah when we will study, right? और ये जो लेटरल पोर्स हैं बॉडी में, ये जो और पोर्स है, लेटरल पोर्स हैं, these are called ostia. The lateral pores in their body are called ostia, and the singular of ostia is ostium. So the lateral pores in the body, in their body, are called ostia, singular ostium, and the terminal pore or the main opening in the body wall is called osculum, right? Now dear students, example of subkingdom Parazoa is the only phylum included in this subkingdom is phylum Porifera, right? Subkingdom Parazoa में सिर्फ एक phylum included है, and that phylum is phylum Porifera. So it means that inshallah in the coming new lecture we will study the first phylum and the only phylum of the subkingdom Parazoa, that is phylum Porifera. So inshallah we will study the first phylum of invertebrates and the only phylum of subkingdom Parazoa, phylum Porifera. Thank you.